जो लेक्चर No. आपने देखा नहीं ना, ठीक है। और आपने एक सवाल पूछा था हमसे कि आपको पेपर में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मार्क्स क्यों नहीं मिला, आपको समझ में आया जो मार्क्स नहीं मिला था आपको? हाँ सर, वो स्टेबिलिटी नहीं लिखी। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं लिखी। तो वैसे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, O2 की या O2 नेगेटिव की? O2 की, राइट? हाँ, O2 की। और उसको आप कैसे शो करेंगे, मतलब उसको एक्सप्लेन अगर करना रहता तो आप उसको बॉन्ड ऑर्डर से आप उसको कंपेयर करा सकते थे, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है। हाँ। देवांगी, यू कैन डू दिस, राइट? देवांगी, आप लास्ट क्लास में थे? यस सर। ठीक है, प्लीज डू दिस 4 क्वेश्चंस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग। फर्स्ट का आपने आंसर क्या है? यस सर। डी का। आई थिंक दैट इज फाइन, दैट इज करेक्ट। एक बार कर लीजिए। हाँ, एक एक करके भेज दीजिए आप लोग, ओके? सेंड इट वन बाय वन, नो प्रॉब्लम। बस ये ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, ये डी है, ई है, एफ है, जो
ओके, अच्छा इरम आपने ई का निकाला है, एफ का निकाला और जी का निकाला है। इरम डी का नहीं निकला आपसे? नहीं सर। डी में बताइए किसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता है? सोडियम। सोडियम कौन से ग्रुप में आएगा? सोडियम सोचिए कौन से ग्रुप में आएगा? फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में आएगा तो क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट? आई थिंक ये लिखवाया हुआ है प्लस ना? हाँ, वेरी गुड, +1। अदर्स आर करेक्ट। तारीफ, अब्दुल्ला, आप लोग भी ट्राई कीजिए। Yes, sir, I'm doing assistant. हम्म। ओके, देवांग, हाँ डी का सही है। देवांगी आपने भी आई थिंक ई एफ जी का कैलकुलेट किया, राइट? अच्छा नहीं, देवांगी डी का सही नहीं है आपका। डी इज नॉट राइट, एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखिए डी का। सर मेरा सही है। हाँ नहीं, आपका एरम सही है, डी का सही है आपका। वेटिंग फॉर, प्लीज एक भी अगर किया आप लोगों ने, तारीफ एंड अब्दुल्ला, प्लीज सेंड द आंसर इफ यू हैव डन इवन वन क्वेश्चन। Sir, I'll should wait I 2 send in minutes. WhatsApp or chat? No, you can send in chat, Zoom chat. बस आप ऐसे लिख Okay, लीजिए sir. D and whatever the answer is. But send it fast. आपने एक तो कम से कम किया होगा ना? Same goes for Abdullah. I'm waiting for your answer. Abdullah, you will send me in WhatsApp how you have done it. तारीफ D, E का नहीं हुआ आपसे कैलकुलेट? यस तारीफ। Sir, I am doing in after I do connection. Yeah, fine. These are fine, I think. D is fine, F is fine, G is fine. देवांगी आपने फिर से ट्राई किया D का? यस देवांगी।
देवांगी आपने ट्राई किया? क्वेश्चन नंबर डी, Na2SO2, Na2S2O3 यस सर। कितना आया आपका? नहीं, कैसे आ रहा है? चलिए बताइए जरा। यस देवांगी, टेल मी। 2 into what is the oxidation state for sodium? सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे देवांगी? +1 +1 प्लस सल्फर का क्या लेंगे बताइए? 2x सल्फर का x या 2x? 2x 2x प्लस 3 into -2 3 into -2 is equal to 0 0। तो क्या हो जाएगा? 3 to the 6, 2x is equal to 6 हो जाएगा तो +6 -2, x will be equal to 4/2, that will be equal to +2 होगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने ये 2x नहीं लिया था क्या देवांगी? यस सर। तारीफ, करेक्ट। Abdullah, I have not got any answers from you. Assalamu alaikum Waziha, how are you? Walaikum assalam. Sir, I'm fine. So you are fine but you are very late. इतना लेट क्यों हुआ? वो सर क्लास की वजह से। कोई क्लास थी आपकी इससे पहले? ये सर मैं वो इंस्टीट्यूशन में थी ना, वहां से आई तुरंत मैंने ज्वाइन कर लिया। टाइम का थोड़ा ख्याल रखिए ना, इतना लेट आएंगे तो फिर वापस से तो देखते नहीं होंगे आप, है ना? जो अगर मान लीजिए 15 मिनट छूटा है तो 15 मिनट हम रिकॉर्डिंग देख लें। रेयरली बच्चे ऐसा करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा ख्याल रखें टाइम का। इवन दो आपके पास फोन होगा ना वजीहा, तो फोन में कम से कम क्लास ऑन कर ले तो आपको पता रहेगा कि क्या हुआ है। ये सर नहीं सर, वो मैं रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ। देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग Yes, देख sir. लेते हैं। क्लास में थे आप? नहीं सर, रिकॉर्डिंग देख लिया होगा आपने। लास्ट की 2 क्लास छूट गई थी ना, तो उससे पहले वाली की देखी, ये वाली आधी देखी आधी रह रही है। ऐसे कैसे चलेगा काम वजीहा, बताइए? आप बीच में काफी दिन एब्सेंट थे, है ना? यस सर। फिर तो जल्दी जल्दी आपको रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट करना पड़ेगा ना, ठीक है? यस सर। और ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ना, तो देखिए व्हाटएवर बी द रीजन, ट्राई टू अटेंड द क्लासेस। कोई आप आई थिंक कुछ भी ओकेजन हो आपके घर में, है ना? अगर मान लीजिए एकदम बिल्कुल फंक्शन होगा तब हो सकता है ऐसा कि आपको अटेंड करने से मना कर दें, कोई शादी वादी में अगर जाना हो आप लोगों को, ठीक है? बट अगेन वो हम बोलेंगे कि अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए एग्जाम्स तक, है ना? अब ये ओके बहुत सर। अनफॉर्चुनेट है कि एग्जाम्स के सीजन में ही, मतलब एग्जाम से कुछ दिन पहले ही शादियां होती हैं, ठीक है? बट कभी कभार छोड़ दें, और प्लीज ट्राई टू अटेंड द क्लासेस, ऑल द क्लासेस, ओके? चलिए ओके आंसर्स सर। लिख लीजिए। इसमें तो आपके पास सल्फर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Here you have for sulfur, it is 7 2 is 14, 14 minus 2 12, 12 divided by 2, that will be +6 in just a second. Sorry about that. In H2SO4, oxygen is going to be 4 2s are 8 minus 2. This will be again +6. S2O4 2 negative, so 4 2s are 8, 8, and this is -2 now. So this will be 6, and 6 by 2, that will be 3. This is +3. Okay, so these are the oxidation states. Now write next topic. Average oxidation number or average oxidation state
or fractional oxidation state. Please write here. Some compounds show fractional oxidation state. Some compounds show fractional oxidation state when calculated using general rules. For example, last class में हम लोगों ने एक example देखा था, that was of Fe3O4, है ना? Fe3O4. यहाँ पे if you calculate the oxidation state of Fe, so 3x plus 4 into minus 2 will be equal to 0. So you can see 3x is equal to 8 and x will be equal to plus 8 by 3. Okay, now this oxidation state which is fractional, it is kind of strange, है ना? Because हम लोग oxidation state की जब बात करते हैं तो we are talking about the transfer of electron. मान लीजिए अगर if there was transfer of electron, then what charges would be present on iron and oxygen? Now obviously you can have transfer of electron in whole numbers, या तो 1 electron transfer, 2 electron transfer, है ना? But as you can see here, what we are having fractional electron transfer. Now that is why it is strange. So what does it mean? What is this plus 8 by 3? Plus 8 by 3 means this is the average oxidation state. This is the average oxidation state. Please write. The fractional oxidation number is the fractional oxidation number is actually the average oxidation state or average oxidation number of the element in compound. Now, इसमें आपको knowledge चाहिए होगा. जब भी आपके पास fractional oxidation state आए, तो आप for a once you must think that there is some kind of anomaly here. And there is some kind of anomaly here. For example, we talked about Fe3O4. In Fe3O4, it is made up of, please write, Fe3O4 is formed when the ferrous oxide and ferric oxide, huh? And Fe2O3 are combined. Okay. In ferrous oxide, Fe has oxidation state of +2. And in Fe2O3, Fe has oxidation state of +4. Fe2O3 में +4 होगा. +3 होगा, sorry. 3 to the 6 divided by 2 +3. अगर आपको लग रहा है ना तो सर एवरेज 8/3 कैसे आ रहा, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. यू हैव एक Fe में आपके पास कितना है, यू हैव 2 into 1 डिवाइड बाई 3. सही है. 3 में आपके पास मतलब यू हैव 3 Fe. आउट ऑफ 3 Fe 1 हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 into 2/3.
ठीक है, out of three iron, 2 of the iron have +3 oxidation state. तो इनको अगर आप add up कीजिएगा, 2 into 1 2/3 plus 6/3 that is equal to plus 8/3. This is the average oxidation state. Write this down. Then we will do some questions. We'll take some examples. कुछ 6-7 examples है जहाँ पे general rule follow नहीं होता है. It is not necessarily always the fractional oxidation state. जब भी कुछ anomalous आपको दिखे, then in that case you have to be a bit careful. वो सारे cases we will write it down now. But first complete till here. Let me know once you are done. So लिखिएगा. Calculate the oxidation state of underlined element using general rules. Write A. I think ये किया है, फिर भी आप लोग लिख लीजिए. जनरल रूल से निकालिएगा. H2SO5. इसमें आपको निकालना है सल्फर का. राइट बी. सिमिलर इसके एग्जांपल है, आप इस तरह से ले सकते हैं. S2O8 2 नेगेटिव. Here also sulfur. ठीक है. C. CrO5 में क्रोमियम का. CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें क्लोरीन का. C3O2 दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड, इसमें कार्बन का. जनरल रूल से निकालना है. Br3O8 इसमें ब्रोमीन का. Then you have S4O6 2 नेगेटिव, इसमें सल्फर का. HNO4 में नाइट्रोजन का. Calculate the oxidation state of the underlying element using general rules.
सॉरी यहाँ पे H2SO5 लिखिएगा, माय बैड, अभी ध्यान दिया हमने, H2SO5 नॉट 4, H2SO4 में तो +6 आएगा, H2SO5। If you have calculated A, B, C, then please send the answers. If you have calculated A, B, C, इसमें ये नहीं हम बोल रहे हैं कि you will get fractional, ठीक है? There will be some anomaly. वो क्या anomaly है? जब आप oxidation number बताएंगे तो I will tell you what is the anomaly and then you will understand. You have to calculate the oxidation strain, then you will get the anomaly. Yes, Siba. A is correct. Devangi, yeah, A is correct. A to the 16, yeah. B is correct. Yes, Hiba, B is correct. सही है. ठीक है. You guys are going right. D का नहीं, wait a second, what is D here? नो हिबा, D का देखिए फिर से, क्लोरीन का निकालना है आपको. You will take 2x ना, फिर से करके देखिए हिबा. Calculate once again for D. Okay, so please see, those who have not done till now, sulfur here it is going to have +8 oxidation state. ठीक है. Sulfur here it is going to have +7 oxidation state. ठीक है. Then you will have CrO5, this will be +10 oxidation state. CaCl2 में आपके पास आएगा, yes, Heba correct. You will get 0 oxidation state. When you see C3O2, तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कार्बन का 4/3, right? 2 into 2, 4 divided by 3. Br3O8 में क्या मिलेगा? Again you are going to get here how much? A to the 16, 16/3. S4O62 negative. O6 means 6 to the 12. 12 minus 2, that will be 10. 10 upon 4, that will be 10/4. 10/4, or you can write +5/2. ठीक है. Now in HNO4 negative में क्या होगा? Oxygen 4 to the 8 and hydrogen is +1, so 8 minus 1. 8 minus 1 will be equal to +7. So this will be +7 oxidation state. Now, why it is strange all of these oxidation states? Sulfur का तो सर ठीक है +8 है. No, it's not right. Why? Because sulfur, what is the outermost electrons? What is the valence electron in sulfur? It has only 6 valence electron. Therefore, maximum oxidation state of sulfur can be +6. If it is exceeding +6, that means it is an anomaly. Similarly, if you look at chromium, chromium is what? Saktivikra. 21, 22, 23, 24. Okay, so chromium is going to have what? S1 D5 configuration. यहाँ पे भी आपके पास what is the valence electron? You have 6 electrons, right? 5 and 1, 6. So it is going to have +6 oxidation state will be the highest oxidation state of chromium. Now,
Chlorine cannot have 0 right now because it is attached with calcium and oxygen. Here also it is going to have a fractional. तो fractional के बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा. And all of these rest of them are fractional. If you talk about nitrogen, why it cannot have +7 oxidation state? Because nitrogen, what is the electronic configuration? What is the outermost electron? Nitrogen only has 5 electrons in its outermost shell. That is why it can have only +5 oxidation state. Maximum जो जा सकता है ना, इसका कितना जा सकता है? It can have +5 oxidation state. ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है. So we'll see what are the correct oxidation state for all of these things. ये तो general से आपको मिला. Now we are going to look at what is the correct oxidation state. So write number 1, A, H2SO5. This is also known as Carros acid, and its name is peroxymonosulfuric acid. Peroxy. So H2SO5. H2SO5. My bad. फिर से हमने लिख दिया. Thank you. Sulfuric acid. It has a peroxy linkage. Peroxy linkage का मतलब OO bond होता है. So you have H acid, sulfur, double bond O, OH, O bond O bonded to H. Okay. Now here we have two different type of oxygen. These oxygens are normal oxygen, which are bonded to some other element. But we have these oxygens, which are another oxygen, which are going to have peroxy linkage, and that is why they will have plus. So they are going to have what kind of oxidation state? Tell me, guys. These oxygen are going to have -1, -1. है ना? तो यहाँ पे आपके पास all the red ones are going to have -2, -2, -2. Green ones are -1, -1. Hydrogen is going to be +1. This is also +1. तो सल्फर का क्या हो जाएगा? Oxidation state of sulfur is equal to X ले लेते हैं सल्फर plus 3 into -2 है ना, plus 2 into -1 plus 2 into +1 is equal to 0. यहाँ से 2 into -1, 2 into +1 इसको कैंसिल कर सकते हैं. 3 to the 6, so X will be equal to what? +6. So the oxidation state of sulfur here is what? It is not plus क्या आ रहा था? 8 आ रहा था. +8 नहीं है. क्या है यहाँ पे? It is +6. Please write this down. Similar thing is there in S2O8 2 negative. Double bond O, double bond O. Here you have O negative. Here you have O bonded to O. Same thing here. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास O negative है, तो यहाँ पे you can have H2S2O8 also. ठीक है, other than 2 negative you can also have what? or H2S2O8. दोनों में सेम ही होगा आपके पास. Okay, so what we can write here? 1 2 3 4 5 6 into -2 plus सल्फर का 2x ले लेंगे प्लस 2 into -1 is equal to 2 negative, तो -2 हो जाएगा. So -2 and -2 will cancel each other, and you will get 2x is equal to 6 to the 12, and x will be equal to +6. Write this down. Next we have CrO5. Okay, now the structure of CrO5 is a bit complex. So here we have chromium with a double bond O, and it has bonds with oxygen, and this oxygen, they have internal bonds like this. Okay, now these oxygens 1 2 3 and 4, all of these oxygens are going to have -1 है ना. They are going to have -1 oxidation state, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए peroxy type लिंक OO वाला बॉन्ड है.
this is going to have -2. So chromium is going to be X plus 4 into -1 plus -2 is equal to 0. एक ही -2 के साथ है. So you'll get X is equal to 4 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, you will get +6. Then we have the strange case of bleaching powder. CaO Cl2. Okay. In fact, CaO Cl2, it is present in this form. Calcium 2 plus. Calcium 2 plus. You have one Cl negative. ठीक है, तो एक Cl negative एक positive charge को balance कर रहा है, and then you have OCl negative. This whole thing has a negative charge, OCl negative. Okay, so this one of the negative charge is balanced by chlorine, and the other charge is balanced by OCl negative. Okay, it is balanced by OCl negative. यहाँ पे देखिए क्लोरीन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है. One of this chlorine is going to have -1 oxidation state. If I talk about this chlorine, then हम लेंगे X plus -2 is equal to -1. So X is equal to क्या आ जाएगा? +1. So there is one chlorine which has a -1 oxidation state, and the other chlorine has a +1 oxidation state. That is why the average oxidation state क्या आ जाता है इसका? Average oxidation आ जाता है आपका 0, जो आपका normal general rule से आया था, that you got 0. ठीक है? But here one chlorine has -1 oxidation state and the other chlorine has +1 oxidation state. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Bleaching powder wala case. Yes, sir. Okay. Then you have another strange case of carbon suboxide, C3O2. So क्या बोलते हैं? Carbon suboxide. इसमें क्या होता है? You have 3 carbons, carbon double bond carbon, double bond carbon, double bond oxygen, and double bond oxygen here. Okay. Now in this case, this carbon is going to have -2 because it is attached with oxygen. This carbon is going to have -2 because it is attached with oxygen. Now this middle carbon atom, it is not going to have any positive negative oxidation state because this is attached with carbon atom. So when you are attached with carbon atom, that means you are not going to have, because the bond is with the same element will have same electronegativity. So electron की sharing में आप कुछ नहीं बोल सकते. So this is going to have what? 0 oxidation state. Oh, sorry, -2 नहीं होगा, my bad. This will be +2 ना. Oxygen का -2 होता, my bad. +2. ठीक है. One carbon has +2, the other carbon has +2. और उसी वजह से एवरेज क्या आता है देखिए. One carbon has +2 by total number of carbon is 3 plus 0 by 3 plus 2 by 3. क्या आ जाएगा? 4 by 3. That is why the average oxidation state जो आपको मिला था वो क्या था? 4 by 3. Then we have Br3O8. Br3O8, it has 3 bromines on chain like this. The middle bromine has 2 oxygen with a double bond, and the rest of them, they have 3 oxygen with double bonds. Okay, now let us look at each bromine atom. Okay, let us look at each bromine atom. This bromine is attached with oxygen atom, तो इसकी वजह से -2. This bromine is also attached with another oxygen atom. In how much oxygen atoms? There are 3 oxygen atoms. इस bromine का क्या हो जाएगा? ऐसे देखिए. This bromine is what? 3 into -2, है ना? और बाकी इसका दूसरा बॉन्ड किसके साथ है? It is again with bromine. So this bromine and bromine की वजह से there will be no oxidation state because it is bonded with the same element bromine. So electronegativity difference नहीं, that is why there is no oxidation state. That is 3 into -2, that will be, oh wait a second, 3 into +2, है ना? क्योंकि here you have -2, तो यहाँ पे इसके पास +2 होगा. बार बार हम उल्टा बोल दे रहे हैं. So you will have +6 oxidation state.
Similarly, this bromine is attached with this oxygen. This will be -2. This will be -2. तो -2 को बैलेंस करने के लिए इस ब्रोमीन के पास कितना होना चाहिए? It will have, tell me how much. This bromine should have how much oxidation state? -2 and -2 को बैलेंस करने के लिए +0 0 नहीं, +4 ना. -2 और -2 की वजह से क्या हो जाएगा? -4 है, तो -4 को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? 2 × -2 है ना. This will be +4. And there will be no oxidation state because of these two blue bonds. क्यों नहीं होगा? Because bromine and bromine के बीच में bond है, there is no electronegative difference. And similarly, यहाँ पे जो तीसरा bromine है, this is also going to have 3 × +2 -2 कर दे रहे बार बार. That is equal to +6 oxidation state. So this bromine has +6. This has +4 and this has +6. यहाँ पे अगर आप देखें तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 6/3 + 4/3 + 6/3 है ना. 6/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 + 2 4 एंड टोटल कितना मिलेगा आपको? 16/3 मिल जाएगा ना. हाँ, 16/3. 6 4 10 और 6 वही आपको मिल रहा था जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट था. राइट दिस डाउन. उसके बाद क्या था? S4O62 नेगेटिव. Here you are going to have 4 sulfur. Okay. Now the end sulfurs are going to have double bond O, and O negative. Here also double bond O, O negative. ठीक है. तो because of हाँ, तो इसकी वजह से देखिए you are going to have how much? What is the oxidation state? You have 2 bonds with oxygen. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? This will be -2. इस वजह से +2. यहाँ पे आप देखिए this is O-1 भी चार्ज है यहाँ पे, है ना. This is oxygen and then you have -1 also. तो एक बॉन्ड है, that is why you will have +1 oxidation state. Here you have double bond with oxygen. Oxygen में कोई चार्ज नहीं है. Oxygen completely is bonded to the sulfur atom. इस वजह से यहाँ पे इसके पास होगा again +2. So in total, this sulfur is going to have +5 oxidation state. +5 और इस सल्फर में भी क्या होगा? +5 oxidation state. Now these two sulfur are going to have 0 oxidation state. Why? Because it is only bonded to sulfur and no other element. Write this down. Right next. सो Last. सर एक बार आप ऑप्शन ई दिखा सकते हैं उसका सोल्यूशन. Yeah, sure. E. हाँ, very good. सर इसमें जो मिडिल कार्बन है उसका हम्म। चार्ज 0 कैसे आया? आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में हमने बताया था दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. सही है. कार्बन पे +2 क्यों आया? बिकॉज कार्बन इज बॉन्डेड टू व्हाट? इट इज
एक बॉन्ड इसका किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट -1। दूसरा बॉन्ड भी किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट -1, तो -1 -2 क्या बोल सकते हैं इसको, टोटल -2 चार्ज आ गया। सॉरी, ओहो माय बैड, ऑक्सीजन के साथ है मोर प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट +1 एंड +1, तो टोटल कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, ओके बट इफ आई टॉक अबाउट दिस कार्बन एटम, ये तो सेम है ना, सेम कार्बन एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी ही नहीं। सही है, जैसे आपके पास मान लीजिए H और H के बीच में बॉन्ड हुआ, तो इन दोनों में क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ ऑफ दीस हाइड्रोजन विल बी 0 एंड 0, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में, अच्छा देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं, let's suppose you have HCl, which is more electronegative here, which is more electronegative, क्लोरीन chlorine। ऐसे बोल सकते हैं कि electrons will be a bit more towards chlorine, so this will be delta negative, this will be delta positive, correct है? यस If there was complete transfer of electron, chlorine will be -1, hydrogen will be +1, if there was complete electron transfer, है ना, तो क्लोरीन -1 होता, हाइड्रोजन +1 होता। सही है, या ओके ओके गॉट इट। तो जब भी आपके पास यू हैव सेम बॉन्ड्स ना, उसी वजह से यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड देयर इज नो ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ दिस ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड देयर इज नो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लास्ट क्या था आपका, HNO4। HNO4 has this structure, nitrogen, it has one double bond oxygen, another it is a dative bond between nitrogen and oxygen, and then you have one more bond with oxygen which has another bond with oxygen, and then you have hydrogen. So there is a peroxy linkage यहाँ पे भी. Here you have O, this nitrogen, since it is having 4 bonds, it will get a positive charge, and this oxygen will have negative charge. So positive and negative, this whole compound is going to be neutral. ठीक है, but इसके अंदर you have a formal positive and formal negative charge in nitrogen and oxygen respectively. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, so nitrogen is going to have, see here, एक positive charge ये रहा, then nitrogen is bonded with one oxygen here like this, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इन दो बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा, +2, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 3 + 1 4, and this positive charge, total nitrogen में oxidation state will be equal to +5. Can you write this down? HNO4 is also written as HNO2 and O2, इस तरह से। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, जस्ट लुक एट योर नोटबुक्स, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो।
Okay, चलिए, can I move on now? आगे बढ़े. Right, next. There's a term that is known as valency, and then we have talked about oxidation state also. Right here, difference between valency and oxidation number or oxidation state. एक बार समझ लीजिए, then you can copy this. Okay. Valency का क्या मतलब होता है? Valency talks about the combining capacity of an atom. ठीक है? The combining capacity of an atom. It is expressed as the number of hydrogen atom or the double the number of oxygen atom with which an atom of the element combines. लेकिन oxidation state क्या होता है? It is the residual charge, तो partial charge होता है, ठीक है? Which an atom has or it appears to have when all the atoms are removed as ions, है ना? तो हमने HCl की बात की थी, for example. HCl में आपके पास you have delta negative and delta positive. जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन को हम नेगेटिव लिखना पड़ेगा और हाइड्रोजन को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा when we are going to break it. So वही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट it talks about the dispersal of charge and the residual charges which an atom has. But valency, it talks about the combining capacity. For example, if I talk about carbon, it can combine with 4 hydrogens. It can combine with 4 hydrogens. If I talk about nitrogen can combine with 3 hydrogens, being neutral. ठीक है? Then you have, since it refers to the combining capacity, it is a whole number only. As such, it does not carry any plus or minus sign, है ना? तो इसमें से क्या होता है? This is going to be a whole number. Integer भी नहीं हो सकता ये, ठीक है ना? Fraction तो हो ही नहीं सकता, because it is talking about combining capacity कि कितना atom उसमें आ सकता है. But if you are going to talk about the residual charges, since it refers to charge, it can be positive, negative, or 0. For example, NH3 में nitrogen has oxidation state of -3 and hydrogen का +1 होता है. But in valency, it is going to be just a whole number. Next is valency of an element cannot be 0 except for noble gases, है ना? I mean, that is for sure, because combining capacity कुछ ना कुछ किसी ना किसी atom की होगी. तो oxidation state of an element can be 0. For example, oxidation number of carbon in CH2Cl2 is 0, है ना? Because of hydrogen में आपके पास +2 and chlorine का -2. They are going to be cancelled and you will have carbon as 0. Now, since atom always combine in whole number, valency of element is always whole number. In general, elements like carbon, nitrogen, sulfur exhibit constant valency. Thus, nitrogen in all of its compound is 3. Nitrogen की valency क्या होगी हमेशा? It is going to be 3. Second period के element में there is not going to be much change. But oxidation number may also have fractional values. For example, the oxidation number of sulfur in Na2SO4 is plus 2.5. This is talking about what? It is talking about the average oxidation state. Sulfur की ये क्या बात कर रहा है? It is talking about the average oxidation state. ये हमने देखा था S4O6 2 negative वाला केस ही है, Na2S4O6 वाला, ठीक है? It is going to be plus 2.5, that is fractional. Now, carbon, nitrogen, sulfur, they can have variable valency. यहाँ पे valency मत लिखिए, यहाँ पे इसको काट के लिखिए, variable oxidation state लिखिएगा, ठीक है? Even elements like carbon, nitrogen, sulfur exhibit variable oxidation state. For example, oxidation number of nitrogen. अब ये अलग-अलग है, अलग-अलग compounds में अलग-अलग oxidation state nitrogen का. लेकिन if I talk about valency, तो nitrogen की valency हम क्या होगी हमेशा? It is going to be 3. Sulfur की valency हम बोलेंगे तो sulfur की valency is going to be 2. Carbon की valency is going to be 4, and so on. ठीक है? Please write this down. So, Tell me. Yes. Someone was saying something? so for nitrogen, it has variable valency, right? Variable valency कैसे? So 3 or 5. Sorry? So carbon and nitrogen have variable valency. Variable valency? Yeah. How?
So वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट? no valency. वैलेंसी Yeah. मतलब, लेकिन देखिए कॉमनली नोन या फिर मतलब एनॉमलस केस मत आप लीजिएगा, ठीक है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मत ले लीजिएगा, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी चार्ज स्पीसीज, उसमें कार्बन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, हम मॉलिक्यूल्स को नहीं देखेंगे, ठीक है? कंबाइनिंग कैपेसिटी Yes. पता चलता है Yes. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। Yes. गॉट इट है बात? आप Yes, sir. व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटी ना, तो हम एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल से मतलब इन्फरेंस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं आप एग्जांपल देंगे सर यहाँ पे तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड लीजिएगा सर, एक ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, ये तो दैट इज नॉट अ गुड एग्जांपल, बिकॉज वो वैलेंसी का जो डेफिनेशन है उसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी किससे डिटरमाइन होगी? इट विल बी डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंस इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको फुलफिल करने के लिए यू नीड 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, है ना? सिमिलरली अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, देन इट्स, हाँ, उसके लिए आपको 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तभी उसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, एंड देन वैलेंसी विल बी सैटिस्फाइड। गॉट इट है बा? Yes. ओके, राइट दिस डाउन, लेट मी नो वंस यू आर डन। लेट मी नो वंस यू आर डन। फहद आप क्लास में हैं? फहद नहीं है क्या क्लास में? अच्छा अच्छा, okay. You're quite silent today. How was your exam, by the way, Fahad?
Okay, Waziha is done. Devangi is done. Done. ठीक. Wait, next. Stock notation. Okay, stock notation. Stock notation, it is not very difficult. ठीक है, stock notation को ज़्यादा difficult नहीं. It just talks about how to write the name of the compound which is having variable oxidation state. जिसमें एक के पास variable oxidation state होता है. For example, if you have Cu2O, then you will write this as copper में क्या oxidation state होगा? 2 in 2x is equal to -2. तो 1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का ना, तो इट विल बी कॉपर 1 ऑक्साइड. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव HgCl2, then in this case mercury has an oxidation state of what? Oxidation state of 1. So this is in Roman numbers. Okay, ये 1 रोमन नंबर्स में नहीं, 1 नहीं होगा, इसमें 2 होगा. मरकरी 2 + 2 क्लोराइड. ठीक है. नाउ अगर आपके पास इफ यू हैव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तब तो आसान है आपके पास नाम लिखना, बिकॉज वट एवर मेटल यू हैव जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, अदर आर नॉट गोइंग टू बी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना. जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसको आप इस तरह से रोमन नंबर्स में लिख लें. बट व्हाट इफ यू गेट, फॉर एग्जांपल, if you are asked to write the formula of, let us suppose, manganese 7 oxide. ठीक है, मैग्नीज के लिए आप क्या लिखिएगा? Mn. ऑक्साइड के लिए लिखिएगा आप ऑक्सीजन का O. मैग्नीज का क्या दिया हुआ है? 7, so you will write 7 here. ऑक्सीजन का क्या होता है वैलेंसी? 2, and then you will cross multiply, so you will get Mn2O7. Got it? Yes or no? Please tell me. All of you got this, guys? Yes or no? Yes, sir. Okay. So I will give you some questions. उसका आप लो. This is one type of question जहाँ पे आपके पास क्या है? You have been given the formula. आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसमें ऑक्साइड आयोडाइड आएगा. ठीक है, फर्स्ट हम आपको बता देते हैं. ठीक है, फर्स्ट वाला हम आपके लिए कर देते हैं, बाकी यू ऑल कैन डू. या फिर फर्स्ट भी तो आप कर सकते हैं ना, फर्स्ट भी कर सकते हैं आप. ठीक है, लिखिए. जब एक और चीज इसका स्टॉक नोटेशन जो होगा ना, ये तो स्टॉक नोटेशन में इसका नेम हो गया. स्टॉक नोटेशन में इसका जो फॉर्मूला होगा, इट इज गोइंग टू बी Cu2(1O). ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला.
आई नहीं है, 1 है, ये रोमन न्यूमरल्स में, रोमन न्यूमरल में 1 है ये, ठीक है। इसमें से आप इनको कीजिए, फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड व्हाट, 7th वन। देवांगी, हाँ सही है, या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस वेरी गुड। So in HAuCl4, chlorine will have -4, that will go that side, it will become +4. Hydrogen will have +1, that will go the other side, it will become -1. 4 minus 1 will be +3. Sorry, +3 and Cl4. FeO, it will have 2. MnO2 is going to have 1. No, wait a second. No, MnO2 is going to have 4. Will you write this down? And then we'll do another type of question.
इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आप इसमें से कर लीजिए। निकल 2 सल्फेट, सल्फेट में एक चीज याद रखिएगा, SO4 होता है सल्फेट, एंड इट हैज व्हाट 2, ठीक है ना। इसमें चार्ज क्या होता है, 2 चार्ज होता है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। चलिए हम निकल सल्फेट का कर देते हैं आपके लिए। प्लीज सी हियर फॉर निकल सल्फेट, you have nickel and sulfate is SO4। निकल में इन्होंने बोला हुआ है इट इज गोइंग टू हैव 2, ठीक है। सल्फेट का क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, बट सिंस वी आर गोइंग टू जस्ट टेक दी वैल्यू नॉट द साइन, क्योंकि हम लोग को इसमें ये बनाना है, वी हैव टू मेक हियर कंपाउंड्स 2। तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो इट इज नाउ निकल ट्वाइस SO4 ट्वाइस। तो निकल टू SO4 ट्वाइस, दोनों में अगर आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट NiSO4। So this will be just nickel sulfate like this। बाकी आप निकल सल्फेट किया आपने, थैलियम सल्फेट कीजिए, tin oxide and chromium oxide, do these 4। अच्छा, हिबा ने 4th का किया है, ठीक है। ओके, हिबा से पहले किसी नहीं ना, 4th का हिबा आपका सही है। दिवांगी, यस करेक्ट करेक्ट, एंड या करेक्ट, वेरी गुड। यस, हिबा करेक्ट फॉर द 6th one also। इरम, हाँ सही है। नहीं, एक सेकंड, इरम क्रोमियम में बताइए क्या बोला हुआ इन्होंने, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट।
यस एरम, क्रोमियम का कितना है 3, और ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन में कितना लेंगे, क्या ख्याल है एरम? 2, हाँ, तो क्या हो जाएगा Cr2O3, है ना? आई डोंट नो, आपसे वो टाइपो है, O4 लिखा है आपने, इस वजह से सॉरी सर। टाइपो। हाँ एरम, टाइपो था, क्या था? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो टिन ऑक्साइड है आपके पास, सो यू हैव Sn एंड ऑक्सीजन। Sn में उन्होंने बोला है 4, ऑक्सीजन में बोला है उन्होंने 2, तो यू विल हैव Sn2O4। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, SnO2। देन यू हैव थैलियम, दैट इज Tl1SO4, so this will be Tl2SO4। बाकी क्रोमियम ऑक्साइड का हमने लिख ही दिया है, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है ना। स्टॉक नोटेशन, वही ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना बैलेंसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए यू विल गेट सम क्वेश्चंस। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी इवन इन स्टॉक नोटेशन यू हैव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पे पूछे तो यू कैन डायरेक्टली राइट कि थैलियम का यहाँ पे क्या है, इट इज गोइंग टू बी +1, आयरन का यहाँ पे +2, Fe2O3 है, तो 3 2 6 and 6/2, this will be +3। कॉपर आयोडाइड में कॉपर का +1, कॉपर ऑक्साइड में इट विल बी +2, MnO2 में +2, यहाँ पे +4। अगर इस तरह की स्पीड आप लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि आपको पेन ना उठाना पड़े,